Good morning, students. So let's start with today's biology class. In the previous class, I have taken the live class in which I have taken the topic mutation, and in that mutation what we have studied is mutation is actually a change. Okay, it can be either in a chromosome, it can be either at a gene level. तो वो सब मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि how the mutation can lead to some abnormalities or disorders in human. Okay, and related to that, next topic is genetic disorders, because the variation that was given, the term that was given by Morgan, उससे रिलेटेड उसने हमें म्यूटेशन के बारे में बताया कि म्यूटेशन किस तरह से आती है, कि म्यूटेशन क्या होता है, कोई भी चेंज, तो वो चेंज जो है जब जीन्स के अंदर होता है या क्रोमोसोम्स के अंदर होता है तो उस चेंज को हम जेनेटिक चेंज बोलते हैं। और उस म्यूटेशन की वजह से अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी बॉडी के अंदर होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मीन्स एनी चेंज और म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम और जीन इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, so these basically we are going to study all these genetic disorders that is in your syllabus. So it can be either due to chromosomal abnormalities or due to gene mutation. जैसे मैंने आपको बोला कि म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन जनरली हम बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं, स्पेसिफिक लेवल पे, तो इसलिए हम अगर जीन के अंदर कोई चेंज होता है तो उसको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं, लेकिन अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज होता है तो उसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो किसी भी जीनोम के अंदर किसी भी अगर हम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखते हैं तो उसके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, एक्सेप्ट सम क्रोमोसोम्स विच विल रिप्रेजेंट द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जनरली 2 होते हैं ये, या 1 भी हो सकता है। तो the chromosomes other than sex chromosomes are called autosomal chromosomes, and the chromosomes which determine the sex of the organism are called sex chromosomes. ठीक है, तो autosomal chromosomes जो हैं उनके अंदर अगर कोई abnormality होती है तो उसके अंदर हम एक ये वाला syndrome पढ़ेंगे which is called Down's syndrome। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसमें हम टर्नर्स और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम हम स्टडी करेंगे। ये डिटेल में हम 1 by 1 आई विल बी टेकिंग अप। सेकेंड वन इज़ ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जेनेटिक लेवल पे अगर एक जीन के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, जीन आपको पता है बहुत स्पेसिफिक होती है, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, उसका फंक्शन, स्पेसिफिक साइट के ऊपर जीन जो है वो डीएनए के प्रेजेंट होती है। इफ़ सम चेंज टेक्स प्लेस इन द जीन इट कैन ऑल्सो लीड टू सम डिसऑर्डर, इवन द सिवियर डिसऑर्डर्स इट कैन लीड टू। ओके, तो इस टाइप के म्यूटेशंस को हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ये सब है। It can be either recessive autosomal, means जो sex chromosome it is of 2 types further। जीन चेंज अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर हो रहा है तो उसमें हम अलग टाइप से स्टडी करेंगे, और अगर जीन के अंदर कोई चेंज हो रहा है और वो जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है तो वो सेक्स क्रोमोसोमल जीन म्यूटेशन में आएगी। ठीक है, इसके अंदर 2 कैटेगरीज है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और कैटेगरी है रिसेसिव और डोमिनेंट की। तो जनरली हम रिसेसिव को स्टडी करते हैं, ज़्यादातर जो जीन म्यूटेशंस होती हैं वो रिसेसिव टाइप की होती हैं, बिकॉज रिसेसिव के केस में क्या होता है, तभी वो अपने आप को शो कर पाएगा, डिसऑर्डर या जीन म्यूटेशन अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगी जब वो दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होगी, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो कर सकता है। ठीक है, कुछ डोमिनेंट भी हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रिसेसिव को ही स्टडी करेंगे। रिसेसिव में भी फिर फर्दर अगर वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है तो कौन से हैं, और अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है वो तो कौन से हैं। ठीक है, तो रिसेसिव ऑटोसोमल में हम स्टडी करेंगे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये 4 हम स्टडी करेंगे। और रिसेसिव सेक्स क्रोमोसोमल में हम स्टडी करेंगे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, और इसी के बेस पे फिर हम पेडिग्री एनालिसिस को भी स्टडी करेंगे, जो कि इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टेक अप क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। So first one is due to chromosomal abnormalities. As I told you, chromosomes can be either autosomes or sex chromosomes. So autosomes, when there is addition or deletion of any autosomal chromosome, then it will lead to some autosomal disorder. For example, in case of human, the most common is Down syndrome,
which is due to trisomy of 21st chromosome. Means 21st जो chromosome है, you know that in human being all the chromosomes are present in pairs. If any of the pair हैज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मीन्स 21st जो नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके अंदर अगर एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी. ठीक है. और इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम and the person is mentally retarded. I will show you one video, share one video with you, then you will find it, then you will be more clear. And in case of sex chromosomal disorders, it can be due to either aneuploidy or polyploidy. Aneuploidy क्या होता है, अगर एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम रिमूव हो जाता है, सॉरी one second, this is polyploidy and this is aneuploidy. Okay, so polyploidy is when a full chromosome, one chromosome, it gets added on. Like in case of we are talking about sex chromosomal disorder, तो यहाँ पे X chromosome पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा. और aneuploidy में क्या होता है, जब एक पूरा का पूरा chromosome डिलीट हो जाता है तो ये हो जाएगा XO. The condition in which one X chromosome will be added is called as Klinefelter syndrome. In this case, the male with female characters will be there, which is the symptoms of this syndrome. And aneuploidy is in the case of Turner syndrome, in which extra X chromosome or Y chromosome will be removed. Only one sex chromosome will be present. This is also a kind of disorder. So let us see the video, then you will be more clear. This video mainly focuses the aneuploidy condition of chromosome. So, aneuploidy is a condition when the number of diploid chromosome increases or decreases by the number other than exact duplicate. Aneuploidy may be seen in the sex chromosome as well as the autosomal chromosome. Down syndrome, Edwards syndrome, and Patau syndrome are some common examples of autosomal aneuploidy, whereas the Klinefelter syndrome, Jakob syndrome, and Turner syndromes are some common examples of sex chromosome aneuploidy. Now, let's see each disorder in brief. Down syndrome is a congenital disorder in human due to trisomy of 21st chromosome. Translocation of 21st chromosome may be the other reason for this syndrome. This syndrome was first reported in 1866 by Sir Langton Down. 1 in every 800 child have this disorder. This disorder can be diagnosed in the second and third trimester of pregnancy by ultrasonography or amniocentesis. The symptoms includes short height with round face, large mouth opening with large tongue, defective heart, and mental retardation is also noticed. The karyotype of Turner syndrome is XO. It means the female is partially or completely missing an X chromosome. Henry Turner in 1938 first reported this syndrome. The frequency of this disorder is 1 in every 3,000 child. The symptoms includes short height with slow growth rate. Secondary sex organ do not develop. In most of the case, woman is sterile in nature. This disorder is a sex chromosomal trisomy, in which a male contains 47 chromosomes with XXY karyotype. 1 in every 500 children suffering from this disorder. This disorder was first discovered by H.F. Klinefelter in 1947. Here, the body is phenotypically male with ill-developed testes. Chest is female-like. Usually, height is